टॉपलिंग. टॉपल मीन्स गिरना. सो अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज गिरती है तो वी यूज द वर्ड टॉपल. फॉर एग्जांपल, द टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टॉपल्ड आफ्टर द प्लेन हिट इट. सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टावर गिर गया. टॉपल इज गिरना, ढहना या कोलैप्स करना. इन अदर यूजेज, द अर्थक्वेक टॉपल्ड द चिमनी डाउन. सो किसी फैक्ट्री के ऊपर चिमनी बनी होगी, वो अर्थक्वेक के कारण कोलैप्स कर गई, गिर गई. टू टॉपल ऑल्सो मीन्स किसी को धक्का मार के गिराना. सो टू पुश समवन और समथिंग सो दैट इट फॉल्स इज ऑल्सो टू टॉपल. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड toppled the blocks down with a kick. Hopefully, we are getting all the different usages of the word topple here. Now let's see how the word has been used in the clipping. But what about BJP's own leaders? Why are they kept so unstable? In fact, you could then go ahead and say BJP is not just very good at toppling chief ministers from opposition parties, but it's also quite good at toppling its own chief ministers. So let's paraphrase what the speaker is saying here. BJP is not just good at toppling chief ministers from other parties, but it is also quite good at toppling its own chief ministers. BJP ना सिर्फ opposition पार्टी की सरकार गिराने में एक्सपर्ट है, but BJP अपने चीफ मिनिस्टर्स को गिराने में भी माहिर है. We often use the word topple with reference to government. So जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि सरकार गिर गई, वैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं to topple the government. In other usage, the Communist Party was directly involved in the protests that toppled the democratically elected government. Hopefully, we are getting the meaning here. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side.